Before we start question number 21 and 22 of exercise 3.2, I'd like to clear one important concept. That is, ये वर्ड डिफाइंड बार बार आ रहा है ओके मैट्रिक्स में व्हाट इज डिफाइंड ओके तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा. सो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, if we have matrix A and if we have matrix B, then AB, that is multiplication of matrix AB, is defined if number of columns in A should be equal to the number of rows in B. So this is the condition for a defined matrix AB, right? And that is given on page number 73. डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एग्जांपल लेके समझ सकते हो. ओके, सी वी हैव मैट्रिक्स ए. इफ आई विल आस्क यू टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन इट इज 2 क्रॉस 3. ओके, ओवर हियर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2. So the answer, if I ask you to find out the AB, then you won't get any answer. Why you won't get any answer? Because over here the number of columns in matrix A is 3. Okay, and over here number of rows in matrix B is 2. That means आप ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट्स है, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा रो है ही नहीं, राइट? एंड दैट इज हाउ द ए बी कैन नॉट बी डिफाइंड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग डिफाइंड. ओके, so I hope you have understood and you have to remember this important condition to find out whether the matrix is defined or not. Now let us try to understand कि एडिशन में मैट्रिक्स डिफाइंड या अनडिफाइंड कब हो सकता है. ओके, सो let us consider that we have again two matrix. So if the order of these two matrix is same, then and then A plus B is defined. Okay, because as we know in addition we are doing addition element by element. Okay, and that is how the order has to be same if the matrix A plus B is to be defined. Okay.